hello test. So last time we had done line chart, sorry, bar chart, column chart and pie chart, right? So you can hear me clearly, right? Yes, yes. So this is a area chart where we see entire area is shaded, right? There's basically this is kind of a line chart only. So the same graph when you draw, whatever you drew with the your line, not the line, I would say with the other column chart and bar chart, it is the same values. But this time it is represented as a area. It is kind of a line chart with a area, and it is showing two different values progress. So you can consider this as a line chart which is growing up, and the second one is also shown in orange. So it kind of little bit indicates the increase and the decrease. So here definitely we are seeing there is an increase, but it is not necessary. It will show every time as an increasing line graph. It can be continuous. For example, if we have the year, let's say we have let's say it reduces. Let's see how the graph changes. So you see there is a drop in the amount of patients which is in the number of people that died, right? So that is the drop we see in the year 2004 to 2008. So you see a drop over here, and then you can maybe more patients got admitted during this time, in some period of the year. So let's see, sorry, I'm changing the same value. So more patients were admitted to the hospital, let's say, in the year, and let's see if it gets reflected. Why doesn't it show? Okay, the data is up to a certain point. It's up to 2014. Okay, so let's make 2008 onwards number of patients to be more. So you see this area chart kind of gives you a little bit of comparison also between the two. There is a drop in the number of patients which died, and there is an increase in the number of patients that were admitted. So this kind of graph is also very useful. Okay. So line graph is it basically connects all your data points, and over a period of time you can say, or one value against the other. So here again this graph looks similar to the other graph, but you don't see, you don't get to the area plot gave you a very different view. So let's see if we can if we have the same data on the other, on the line graph, how does it look like? So here you get a line graph, but exactly it doesn't give you that area. The comparison is not very you have to think a little bit over here, but this graph is a little better view. It gives you a kind of a better view sometimes, so that those kind of decisions you need to make, whether to use a line graph or area graph. An Xyz scatter is basically you're not drawing a line, and you're not trying to see the flow of the flow of the points. You're trying to see patterns basically. So here
So this is XYZ scatter. So it is like you're still drawing the data points, but you're not drawing a line between them. If we had to draw the line, this would have been a straight line like this, and it wouldn't have it would have looked something like like this. But it doesn't tell you exactly the in between points also. If it is not there, it will be connected, and you will feel as if the data is continuous. But here in XYZ scatter, the data is not continuous. There is definitely a pattern, right? There is a pattern. There is a there are three patterns over here, right? One between 1900 and 2000, there is one pattern of increasing data points. In between 2000 and 2008, there is a decreasing pattern, and you see a very there's a consistent increase of number of people that died between 1990 to 2000. But between 2000 and 2010, something happened. The amount of patients was always the same, and the number of patients that died were they were less or more. It kept on varying. So once you know these patterns, you can try to further analyze why these patterns are showing in a particular period of time. What happened? Why there was less patients and consistently is the same number of patients every year, and the patients that died was less, but it varied. But on the other hand, in the other two patterns, the patients kept on the number of patients it kept on increasing with increasing number of admissions. So but again in 2010 to 2018 or somewhere, there's a same pattern repeated. So can we say this second pattern that we see in this diagram will repeat again in the future? Because this seems like an alternate behavior, right? It will increase, then there will be a period where it will show a very unusual behavior, and then again it will repeat. So if this patterns will increase, means we can expect that the next pattern can be something similar to this second middle pattern. And so this if you want to predict things in future also, it is called insights. So sometimes like in AWS there is the charts are drawn using a service called QuickSight. So that time it can not only draw your chart, but also it can predict what is the next pattern going to be based on all this data. So are you able to see the patterns over here in the diagram, the three patterns? Yes, sir. Okay. So this is about Xyz Scatter. So there is a clearly you see the points are not exactly connected using a single line, otherwise it will not able to determine the pattern. The next comes the bubble plot. So bubble plot, in this case y-axis is plotting the total patients. Okay, so this 0 to 60 is the total number of patient, that is column number B. Then the bubbles are just showing the magnitude of deaths, which means so magnitude of deaths means like how much deaths happened. So here you can see okay, here we are not given the year, but okay, so in the next graph the year is printed properly. So just this was just to indicate, I think we need to have some some kind of a measure against what so that we know when where did it happen. So if this was used on a let's say a world map, then you could see that you could say that this part of the area in the world map had greater sales. In this case, which year had a greater number of deaths? Those kind of things. The bubble chart shows you a magnitude. So in this case, you see that the deaths have been increasing from 1975 to 1995. Then it reduced
between 1995 to 2000, and then from 2000 to 2020 again it increased, and then in 2015 or something, or 2010, it was very huge deaths. So the number of deaths initially was between 0 to 5, but eventually in 2020 it became like the magnitude was around close to kind of 10 or something, So let's see the data. So 2010 there was a, let's say the deaths were 10. Data is not showing. So this is amount of patients. So you see the number of deaths, that is 1, so it's showing now the size over here. So the size of the magnitude over here. So it is not like it is showing you exactly the data. 156. Okay, in 2008 we are saying it is 1. Can we insert data labels? Okay, so this is saying this is a this value is 1. So these are the x-axis is not exactly your it doesn't tell you that this is 20, this is 25. It is actually showing you the magnitude against a particular axis. Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. ओके तो ये मतलब 0 to 5 है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर 5 है, ये नंबर 10 है ऊपर. So that is not what it is showing the magnitude. So there's a difference. Okay, in the line graph this means this is 2040 and 2020, but in case of bubble chart it means that one axis will show you the exact number as per the axis, but the second axis is showing you the magnitude, not the actual x coordinate values. So that is a bubble chart. Then here there is a net plot chart that we see. So we are looking at number of patients and the number of died in what year. So you can see the entire all the data on one plot, and we can compare. So the orange means the more number of patients were admitted. So in 1995 there were more patients admitted but less patients died. So always the blue color is near the 0, means there always the patients have not died so much in all these years except in this year, which is 2011. In 2011 you see a blue dot is very close to the orange dot, means the amount of patients that came in over the amount of patients that died. And there is another chart over here. This is showing you the product, what was the sales, what was the quality of the product, and what was the profit of the product. So in this graph we are comparing profit and sales for each product. The previous one showed the amount of patients that came in and died in a particular year, the net plot we say. And in this case there is a profit sales been showed. Profit is shown in green color and sales is shown in orange color. So you can compare so here in the product A there was more profit
but less sales. You see, there was more profit but less sales. Means you sold less products but you got maximum profit. So is there any so can you look at the graph and tell me if there is any product that at the they did lot of sales but the profit was too less? Can you tell me which where in the graph which product can be that by looking at the graph? Is it visible? Yes sir. तो मैंने बोला प्रोडक्ट ए में प्रॉफिट ज़्यादा था लेकिन सेल्स बहुत कम था, मुझे वो ग्राफ देख के पता चला। हाँ। ऐसे उल्टा कभी हुआ है? कौन से प्रोडक्ट के साथ हुआ है कि यूजुअली क्या होता है, सेल्स ज़्यादा करेगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए था हमें, लेकिन कंपेरेटिवली टू अदर प्रोडक्ट्स मतलब किसी दूसरे ने 10 प्रोडक्ट बेच के 100 रुपये बनाया, लेकिन इसने इसने जैसे एक प्रोडक्ट बेच के 100 रुपये बनाया, तो मतलब दोनों में फर्क। हाँ। तो वैसे कंपेयर वैसे कौन से प्रोडक्ट है जिसमें सेल्स तो बहुत हो गया लेकिन प्रॉफिट जितना आता है वो सेल्स से बहुत कम है, तो वैसे कौन से प्रोडक्ट है? एक मिनट। थोड़ा मैं डायग्राम को बड़ा करूं? नहीं ठीक है सर। ये क्यू पॉइंट देखो ना, क्यू पॉइंट कैसे दिख रहा है आपको? मैं वही देख रही हूँ। हाँ सर। क्यू पॉइंट में ऑरेंज क्यू, हाँ बहुत बड़ा है ना, लेकिन इसका ग्रीन वाला वैल्यू एकदम नीचे है, मतलब ये एक वो नीचे है। हाँ करेक्ट। तो मतलब ये इसका सेल प्रॉफिट लेस है। हाँ, और बाकी के देखो ग्रीन आगे लेकिन ऑरेंज पीछे है, तो एक आपको आइडिया आगे रहेगा ना, एक कंपैरिजन कर रहे हो एक ही चार्ट में सब प्रोडक्ट्स के। तो फिर सर डी जो है, डी, हाँ डी में प्रॉफिट आगे है, डी में प्रॉफिट आगे है। और सर ई में हाँ ई में भी मतलब सेल्स ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट और भी कम है, बराबर है। तो बट अब तो मतलब इससे आपको एक थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है कंपैरेटिवली। अरे मुझे फिर आपको फिर एक डिसीजन ले पाते हो ना कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा बेचना चाहिए, है ना? तो आई वांट टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, देन आई विल सेल मोर ऑफ ए, आई विल ट्राई टू क्लोज ऑल द अदर प्रोडक्ट्स, है ना? काय को इतना मेहनत करने का, इतना बेच के इतना लेस प्रॉफिट लेने का, तो वो प्रोडक्ट्स निकाल दो मार्केट से, है ना? तो ये क्लियर है ना नेट प्लॉट? यस यस। Now this is a stock plot, मतलब whenever you are looking at the stock plot, एक जैसे स्टॉक को आप मेजर करने की कोशिश करते हो तो उसमें एक ओपन वैल्यू होता है, क्लोजिंग वैल्यू होता है, हाई वैल्यू होता है, लो वैल्यू होता है। तो ओपन वैल्यू का मतलब स्टॉक का प्राइस क्या होता है, मतलब वो उसका जो प्राइस होता है वो दिन में पूरा वेरी होता है। तो जब वो स्टार्टिंग होता है तो उसका वो बोलते हैं हम ओपन वैल्यू, और जब इवनिंग में एंड होता है तो उसका जो भी कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग वैल्यू। और हाई वैल्यू मतलब पूरा दिन में वो कितना हाई तक गया, और लो वैल्यू मतलब पूरा दिन में वो कितना लो वैल्यू तक गया। तो आपको लाइक डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टैक कॉलम्स वट एवर आई हैव गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? दिस इज अ स्टॉक नेम, सो लेट्स से कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। Company A, when it started, the trading started in the morning, the value was 5. The open value will be the closing value of the previous day, ना? बराबर है? Yes, yes. And closing value will be the end value of the by 6 o'clock. हाँ, तो मतलब 9 o'clock से मार्केट ओपन होता है तो 6 o'clock में क्या वैल्यू था वो बता रहा है। बट दिन में कितना खरीदी हो गया ये तो वेरी हो सकता है ना,
मैंने पाँच का वैल्यू पे नहीं बेचा रहेगा, मैंने 20 के वैल्यू पे बेचा रहेगा, या मैंने और सबसे लो मैंने 3 रुपये के वैल्यू पे बेचा रहेगा, तो ये वेरी होता है. तो दिस काइंड ऑफ चार्ट इफ यू वांट टू सी, then this is mainly used for stock price variation chart. So you can see that this is showing the number A, here it is showing 3 means it is the इतना नीचे तक गया प्राइस और ये 20 तक जा रहा है ऊपर, मतलब इतना हाई तक गया वो वैल्यू, बराबर है. बट इसका ओपन वैल्यू और क्लोज वैल्यू क्या है, ये जो छोटा डैश दिखता है आपको, ये एक्चुअली क्लोज 10 पे इधर है, फिर बी का 9 पे है. तो इसका मतलब है ये 19 तक गया था 4 और 4 तक नीचे गया, लेकिन एंड में वो किधर रुक गया, 9 पे. तो ये चार्ट आपको कुछ डाउट है? नहीं सर. तो ये कॉलम इन लाइन चार्ट है, where you are seeing some I'm now showing the same stock plot. I have tried to show it in the bar graph. So here you are seeing in the blue one, you are seeing a mix of line chart plus column chart. That is why it is called column line. So the blue one, same data I have tried to print. So here what you see is that the high value of it's showing a kind of a decrease. So that is what you see, 20 to 2 over here. And but it is for different products. Okay, it is not for the same product. And the red and blue line is showing the open value and close value. So this means it opened at 5 and closed at 10. And is there anything which is reverse, like it opened at very high value? Can you tell me any which stock had opened at a very high value but closed at a very low value? Which between A to S? ए का सर हाई वैल्यू है. मैं अभी उल्टा देख रहा हूँ. जैसे मुझे बहुत हाई वैल्यू पे स्टार्ट किया, लेकिन बहुत जब क्लोज किया तो बहुत लो वैल्यू पे उसने बंद किया डे. ऐसे कौन सा स्टॉक है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे गया, फिर वो एकदम लोएस्ट वैल्यू पे आ गया ऑलमोस्ट? एफ का आप देखोगे ये एस एस एक्चुअली ये आपने उल्टा बोला. मैं इसमें क्या है कि जब चालू हुआ था ट्रेडिंग एस का तो बहुत लो वैल्यू था, और जब वो एंड हो गया दिन में वो बहुत हाई वैल्यू पे बेचा गया. मैं उल्टा बोल रहा हूँ. जैसे ये के, अब के को देखोगे ना, ये बहुत हाई वैल्यू पे स्टार्ट किया दिन को, मतलब इसका वैल्यू कुछ 10 रुपीज के लगभग था. बट व्हेन द डे एंडेड उसका वैल्यू कितना हो गया, 3 रुपये ऐसा कुछ हो गया है. तो के का वैल्यू अगर आप ये अभी चार्ट में देखोगे तो के का वैल्यू इधर आप देखोगे, ओपनिंग वैल्यू क्या था 9 और क्लोजिंग वैल्यू क्या है 2. मतलब जो भी बहुत लोगों का नुकसान हो गया रहेगा ना, बिकॉज इट स्टार्टेड एट अ वेरी हाई वैल्यू but by the time it closed it was a very low value, so you cannot sell at low value then. So is this clear, your column line chart? Yes. So most of these graphs are available in LibreOffice, but not the more advanced chart is not available in LibreOffice. That's why to go with Google Data Studio. So here this is another type of chart called Geo Map Chart. So Geo Map Chart is basically got to do with location. एक लोकेशन में कितना प्रोडक्ट्स बेचे हमने, वो चीज़. अभी एक केस में क्या दिखा रहे, जैसे तो बेसिकली इफ यू सी there is, you need to understand what is dimensions and what is metrics. So dimensions is basically the columns that your data columns. So in this case my data column is division, which is of type text, pin code which is of type postal code. मतलब ये location type है. अभी तक आपने जो data type देखा है वो है date time fields, time field, string field, number field,
maybe Boolean field, but this is the first time you're seeing a location field, postal code, or maybe latitude, longitude, something like that. Are you so? And here matrix means it is like a aggregate means आप किसी चीज़ को साथ में मिला के एक टोटल फाइंड आउट करते हो, काउंट फाइंड आउट करते हो, या तो सम फाइंड आउट करते हो, या तो एवरेज फाइंड आउट करते हो. इट इज़ अ ग्रुपिंग. So one of the metrics that we are seeing is record count, which is numbers over here. So do you understand the difference between dimensions and metrics? Yes, sir. Okay. So here if you see we have set up. So let me see if I can show you the sheet. So here you see we have post office name, pin code, and division. These are all the post office which I got from the internet. So this data was copied like this. Now I want to plot all the locations where the post office is on the map. So you can define this field. So this definitely can become your dimensions over here. These dimensions you can use, plus you can mention this pin code is the location, and you need a location field definitely on a geo map. So I don't know where it is. Okay, I must have defined it in the reports. datastudio.google.com. I can connect to a sheet and create a report also, instead of drawing the chart in the So this is a data studio, where you can specify what is your source of your data. So let me see if I can. So here is you can see reports, data source, and explorer. So in data sources you can say where is your data coming from. You can so let's see this report, untitled report, and try to edit it. And so this is a data sources test plot. So test plot is a sheet which I have added. So here this is your test plot over here. You see this is my Google sheet. It says docs.google.com spreadsheet. So one of the spreadsheets. So I'm connecting to this sheet, and then I'm going to Data Studio and creating a report. So in the report, what all I'm saying, let's see over here, I'm having division, pin code, post office name, and record count. The record count is the total number of records. It is a metric, and other three things are the dimensions. And this it is showing like a globe, means it is a location field. So I can edit the field types over here. Because sometimes it is not very obvious from the sheet that this is a pin code, this is a location. So you can edit this basically. So can we edit this over here? And you can okay, in this so once you have you can drag and drop your chart over here, insert the chart that you want. So here you see there are different types of chart, right? There is column chart, that we did pie chart, bubble map, and so bubble map is again it is like a location based
chart, where you see a map or your location world map, and then on that you show your data. So you can try to see how much sales has happened in which area. In this case, we are plotting the where the post offices are. So is this any doubt with this? What is happening in this chart? हेलो हाँ सर, ये चार्ट में क्या हो रहा है, आपको कुछ डाउट है क्या? क्या हो रहा है ये चार्ट में? हाँ मतलब सर लोकेशन, हाँ ये लोकेशन बता रहे हैं सब लोकेशन के लिए, हाँ लोकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब लोकेशन बेस पे आपको कुछ भी दिखाना है ना, तो आप ये यूज कर सकते हाँ। हो। यस, तो इसको मैंने डेटा स्टूडियो में तैयार किया गया है। तो हाँ। ये फ्री टूल है। तो अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको कोई डेटा के साथ कनेक्ट करना है, तो आप डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी डेटा सोर्स इजीली आप कनेक्ट कर पाना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कनेक्ट टू सम ऑनलाइन डेटा सोर्स। दो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन, जैसे आपके लोकल बॉक्स पे कोई डेटा है तो आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर तो इन दिस केस हम लोग ने डेटा शीट को अपलोड किया गूगल शीट्स में, और फिर उधर से कनेक्ट करके बोला ये डेटा सोर्स है और इसका एक जियो मैप तैयार करो और इसका ये लोकेशन फील्ड है। तो ये बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने इसका जो डेटा है इसमें आप देखोगे कि मैंने प्रोडक्ट और सेल्स को भी बताया है और ये बबल चार्ट की तरह बताया है। देखा आपने? मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें ये प्रोडक्ट नंबर 2 है पर्पल में, और लाइट पर्पल में रहेगा तो प्रोडक्ट 1 है। देखा आपने? और उसका जो सेल्स वैल्यू है वो 67 है। तो इसका अगर डेटा शीट में जाओगे तो है क्या, वो देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये डेटा है, इसमें लोकेशन एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। आप देखोगे तो 19.10 समथिंग। तो ये लोकेशन में कौन पर्सन था, उसने कितना सेल्स किया और प्रोडक्ट क्या था। चॉकलेट था, तो इधर बिस्किट, इधर चॉकलेट। तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट सिर्फ 2 टाइप के थे ना, चॉकलेट और बिस्किट, यही बेचा था हमने। तो वो दोनों प्रोडक्ट्स को उसने अलग अलग कलर से बताया गया है। तो मतलब ये 2 मतलब ये बिस्किट हो सकता है और दूसरा वाला चॉकलेट हो सकता है। तो ये इससे आपको क्या पता चलता है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका और कौन सा बबल सबसे बड़ा है। ये बबल बड़ा है कि ये बबल बड़ा है कि ये बबल बड़ा है, क्या सबसे बिका और या किधर बिका, वो कौन से कोऑर्डिनेट्स पे बिका। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सुरेश ने सबसे ज्यादा चॉकलेट बेचा ये एरिया में, बराबर ना? हाँ। ये कोऑर्डिनेट्स का कोऑर्डिनेट भी दिया है इसने 18.10.7020, ये कोऑर्डिनेट पे ज्यादा बेचा गया है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि चॉकलेट ज्यादा बिका है ये एरिया में, और आप एक डिसीजन ले पा सकते हो। और ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ये बबल चार्ट भी मिक्स्ड है इसमें, और जियो चार्ट भी, जियो मैप भी मिक्स्ड है। और तीसरी बात है कि ये जो फील्ड है सुरेश एट 18.7, ये एक्चुअली 2 फील्ड को कॉन्कैटिनेट करके मैंने 3rd फील्ड ऐड किया है, ताकि मुझे पता चले किसने बेचा है। देखा आपने वो फर्स्ट फील्ड, वो सुरेश एट समथिंग। तो आप इधर देखोगे तो सुरेश एक अलग फील्ड में है और इसका कोऑर्डिनेट अलग फील्ड में। लेकिन मैंने जब रिपोर्ट तैयार किया, इसको अगर आप एडिट करोगे तो एक फील्ड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, पर्सन एंड लोकेशन हो गया। तो ये फील्ड को मैंने फॉर्मूला यूज करके ऐड किया है। तो इसको कैसे ऐड किया है, बेसिकली मैंने इसको कॉन्कैटिनेट किया। अभी वो एडिटिंग कैसे हो रहा है मुझे वो दिखा नहीं रहा है, बट आपको समझ में आ गया ना मैं क्या किया इधर। हमने कॉन्कैट फंक्शन किया था ना स्ट्रिंग में। तो पर्सन लोकेशन इज इक्वल टू कॉन्कैट ऑफ पर्सन प्लस लोकेशन। और वो फील्ड को मैं डिस्प्ले करता हूँ फिर इधर, उसको मैंने वो डिमेंशंस ऐड किए हैं। तो
तो ये मैंने टूल टिप में डाला है बेसिकली पर्सन लोकेशन को। टूल टिप मतलब वो जैसे हम कर्सर को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता है ना फील्ड के बारे में। तो इस केस में मैंने टूल टिप बोला, टूल टिप जब भी कोई कर्सर वो पॉइंट पे लेके आए तो उसको पर्सन लोकेशन बता देना, ऐसे देख रहे हैं आप। और इधर मैंने मैट्रिक में क्या दिया है, सम ऑफ ऑल सेल्स, देखा आपने ये। इसमें कोई डाउट है जियो चार्ट में? हेलो, 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 आपको हाँ सर, हाँ सर समझ गए। ओके। फिर ट्री मैप कैसे होता है, बेसिकली एक ट्री की तरह होता है। तो इसमें बेसिकली आपको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बता सकते हो। मतलब इधर क्या किया है उन्होंने, अलग ये जो भी आइटम फील्ड है इधर इसको ग्रुप किया है। प्रिटी बर्ड बर्ड सीड, तो प्रिटी बर्ड सीड किधर है, इधर है। ये कौन से डिपार्टमेंट में आता है, एवियन डिपार्टमेंट में आता है। और एवियन डिपार्टमेंट सब में आता है, मतलब दिस इज ऑल डेटा। ऑल डेटा में दो डिपार्टमेंट्स हैं, एवियन एंड कैनाइन। तो ये बी कॉलम को बता रहा है बेसिकली, एवियन एंड कैनाइन। और उसके अंदर व्हाट ऑल आइटम्स आर देयर, दैट इट सेज प्रिटी बर्ड बर्ड सीड, हेल्दी डॉग फूड, प्लेफुल पपी टॉय, बराबर है। तो इसको तो बेसिकली ये ग्रुपिंग है, मतलब ट्री की तरह दिखता है ना। ये इसका मेन झाड़ है ऑल, उसके अंदर दो ब्रांचेस है, एवियन एंड कैनाइन। वो एवियन के अंदर एक ब्रांच है प्रिटी बर्ड, कैनाइन के अंदर दो ब्रांच है। फिर उसको और आप डीप में जाओगे तो इसके अंदर पैरेट पर्च आता है और इसके अंदर फेलाइन आता है और ये सब आता है। कुछ डाउट है इसमें आपको? नहीं सर। तो कैनाइन एक ग्रुप है और फेलाइन अलग ग्रुप है। इसका ये मतलब नहीं कि फेलाइन इज इनसाइड कैनाइन, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली तीन ग्रुप्स है, तीन आइटम्स है, एवियन, कैनाइन एंड फेलाइन, जो आप देखते हो ना लेफ्ट हैंड साइड में डिपार्टमेंट्स। हाँ सर। एनी डाउट्स इन दिस? नो सर, नो। Okay. Now this is a KPI chart. So KPI stands for Key Performance Indicator. मतलब कभी भी आपको परफॉर्मेंस चेक करना है ना किसी भी चीज़ का, उसको आप बोलो कि मैं मेरा परफॉर्मेंस कैसे मेजर करूँगा। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे आई विल चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कूल, सो हाउ विल यू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कूल? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? Let's say you want to know the performance of all the students that are graduating or post-graduating. How will you measure the performance of a college or let's say school? एक स्कूल अच्छा कभी कहला जाएगा जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन वो कौन सा वैल्यू, क्या आप देखोगे परफॉर्मेंस के लिए, क्या देखोगे आप? तो मतलब स्टूडेंट्स का क्या कहते हैं, मीन्स स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस कैसे इसके ऊपर। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास लेके आए। हाँ सही है ना, ये आपका बेंचमार्क होगा कि यू वांट द परफॉर्मेंस। आप बोलोगे मेरा बेंचमार्क है कि ऑल माय स्टूडेंट्स हैव टू गेट अ फर्स्ट क्लास मिनिमम, ऐसे। या पास, या आप बोल सकते हो मेरे स्टूडेंट्स पास होना चाहिए, मतलब अपने बेंचमार्क ही लो कर दिया है 35%। ये भी एक बेंचमार्क हो सकता है। तो बेसिकली केपीआई इज ऑलवेज मेजरिंग योर डेटा अगेंस्ट अ बेंचमार्क वैल्यू। तो एक स्कूल में कितने बच्चों लोगों को पास हो गए, या ये एक इंडिकेटर हो सकता है। दूसरा इंडिकेटर हो सकता है कितने बच्चे जो
कितने लोगों को, बच्चे लोगों को काम मिल गया है ना, जॉब, व्हाट इज़ द जॉब। तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। अगर आप ऑफिस में जाओगे तो इंडिकेटर हो सकता है कि मेरा कितना प्रॉफिट हो गया या कितना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। तो उसके लिए आपको सर्वे लेना पड़ेगा। सर्वे से आपको एक डेटा सेट आएगा। डेटा सेट से आप एक KPI इंडिकेटर आप मेजर कर सकते हो। सो इन दिस केस नाउ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, किसी ने 1 लिखा है, किसी ने 2 लिखा है और किसी ने 3 लिखा है। तो मैंने उसका जो एवरेज है इधर बता दिया है, जो भी है ना। तो जो भी एवरेज, और मैंने बेंचमार्क वैल्यू बोला है, इसका बेंचमार्क वैल्यू एक्चुअली 3 है एक्चुअली। मतलब 1 to 3 का सेटिस्फैक्शन दे सकते हो। 1 मीन्स अनसेटिस्फाइड, 2 मीन्स सेटिस्फाइड एंड 1 to 5 का सेटिस्फैक्शन है। मतलब 1 इज द लोएस्ट रेंज, 1 मीन्स अनसेटिस्फाइड एंड 5 मीन्स अबव एक्सपेक्टेशंस एंड 3 मीन्स मीट्स एक्सपेक्टेशंस। सो लुकिंग एट दिस KPI इंडिकेटर, 3 मैंने बोला मेरा बेंचमार्क है, इधर दिख रहा है ना आपको, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इज 3, दिख रहा है आपको। सो इसको उसने क्या किया, पूरा मिला के एक एवरेज लिया है। और क्या एवरेज आया, सेटिस्फैक्शन लेवल इज 2.58। और ये डाउन एरो कैसे कैलकुलेट किया उसने, 3 minus 2.58 कैलकुलेट किया है 0.42। तो इसका मतलब क्या हो गया मुझे बोलो, ये KPI इंडिकेटर देखिए। मतलब से हम लोग क्या कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन लेवल बिलो हाँ बिलो एक्सपेक्टेशन है क्या? नहीं सर, बिलो एक्सपेक्टेशन है। हाँ, कितना बिलो है? 0.42। वेरी गुड। तो आपको एक आइडिया आ गया ना कैसे एक, हाँ नहीं मतलब तो आप एक जैसे अपना परफॉर्मेंस मेजर करने चाहते हो, तो जैसे ऑफिस में एटेरिशन रेट भी एक मेजरमेंट होता है कि कितने लोग छोड़ के चले गए हमें। तो अगर 10% से ज़्यादा छोड़ के चले गए तो दैट इज़ नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन, इट हैज़ टू बी बिलो 10% और बिलो 3%, और द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी 3 एंड अबाउ। तो ये या हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए। तो ये आप ऐसा नहीं एक इंडिकेटर यूज़ करोगे, इंडिकेटर्स तो कितने भी हो सकते हैं ना। आप अपने आपको कैसे मेजर करोगे ये आप पे डिपेंड है कौन से KPIs हैं। इसमें कुछ डाउट है, व्हाट इज़ KPI? नहीं सर। ओके, अभी ये ग्राफ देख के, ये चार्ट देख के मुझे बोलो क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या मेजर कर रहे हैं हम? हेलो, इसमें क्या? एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट इज एनुअल प्रॉफिट अबव एक्सपेक्टेशन कितना है? मेरा बेंचमार्क क्या है प्रॉफिट होने का, या एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए मेरा? 1,20,000। वेरी गुड। तो 1,20,000 इज एक्सपेक्टिंग इन एवरी ईयर, आई नीड टू हैव दिस बेंचमार्क। बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू सी इट इज गिविंग यू द मंथली प्रॉफिट्स। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? आप डेली प्रॉफिट को आप ट्रैक करोगे, फिर डेली प्रॉफिट का आप एक सम वैल्यू लोगे और इधर अपडेट करोगे। एक पिवट टेबल, आपने लास्ट टाइम पिवट टेबल क्रिएट किया था, याद है आपको? यस यस। तो पिवट टेबल हमेशा एक डिमेंशंस को लेता है और एक मैट्रिक मतलब एग्रीगेट्स तैयार करके देता है, बराबर है ना? यस। तो यही एक एग्रीगेट आपको दिखाई दिया। अभी इसको आपको मेजर करना है, तो आप इसने ये पिवट टेबल से और एक अपने एक ग्राफ ड्रॉ किया और उसको मेजर कर रहे हो। अभी ये गेट चार्ट है। तो गेट चार्ट आपका जो वो एक करंट परफॉर्मेंस दिखाता है और उसको रेंज भी बताता है। मतलब आप बोल सकते हो कि 0 to 5,000 मेरा लोअर रेंज, अपर रेंज है, फिर 0 to 1,000 एक रेंज है, 1,000 टू दिस ऑरेंज कलर में देखा, इसको ग्रीन कलर में देखा। तो इसमें कोई भी परफॉर्म कर रहा है क्या अच्छा सेल्स दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट कोई भी ए प्रोडक्ट या बी प्रोडक्ट कोई भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बिलो एक्सपेक्टेशन है? इनको ग्रीन में होना चाहिए था ना परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए। यस सर। तो
तो दिस इज अ गेज चार्ट। तो इधर आप टेस्ट प्लॉट में जाओगे तो ये प्लॉट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इधर जैसे ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, एडिट चेक करोगे तो ये गूगल शीट में है, ये लिब्रे ऑफिस में नहीं मिलेगा। यस यस। तो इधर मैंने की वैल्यू बोला है डेटा रेंज है C2 to C14, मतलब C2 to C14 मतलब ये मंथली प्रॉफिट का आपको हेडर भी इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि उसको पता चले ये कॉलम का नेम क्या है ना। मंथली प्रॉफिट से चालू करेगा, फिर इधर कॉलम नंबर 14 तक एंड करेगा। तो दिस इज योर डेटा रेंज एंड व्हाट इज योर बेसलाइन वैल्यू E1। व्हाट इज E1? 1020 1,20,000। और इसको मैंने आपने एग्रीगेट किया है, मतलब इसका आप सम देख रहे हो। एक्चुअली इसका आप एवरेज भी देख सकते थे वैसे, मतलब ये पूरा डेटा का आप सम बना रहे हो और सम को अपना बेसलाइन से आप मेजर कर रहे हो। तो इसमें कुछ आपको नहीं समझा? आपको बेसलाइन वैल्यू क्या है, क्या है ना ये, अगर अपने मैंने भी पहले बार ही किया है ये चार्ट। ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग होता है एक चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है पहले एक चार्ट समझ में आना चाहिए, ये सबसे बेसिक चीज़ होता है। सेकेंड चीज़ वो चार्ट कैसे कभी यूज़ करना है और कैसे उसको क्रिएट करना है, 3 चीज़ होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो एग्रीगेट है ये एवरेज नहीं दिखाता है, ये हमेशा सम ही करता है फॉर सम रीज़न। अगर मैं इसको निकालूँ ना ये ऐसे दिखाता है, और अगर मैं एग्रीगेट करूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सब का सम कर लो। तो देखोगे ये सम 1150 पे है, और इसका जो कस्टमाइजेशन है गेज, मैंने क्या बोला है, गेज रेंजेस फ्रॉम 0 to 5000। और अगर 0 to 1000 रहेगा तो रेड में बताओ, 1000 to 3000 है तो ऑरेंज में बताओ, और 3000 to 5000 है तो इसको ग्रीन में बताओ। तो ये दोनों ऑप्शंस यूज़ करके मैंने इसका एग्रीगेट लिया है, और ये काटा चलता रहेगा जब तक वो रेंज में है। तो उसका सम वैल्यू अगर वो ग्रीन में आ गया तो मुझे पता है कि ये दिस इज़ गोइंग ओके, मतलब दिस इज़ अ रनिंग टोटल, ऐसा बोल सकते हो। रनिंग टोटल को आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपका डोनेशन आया, तो डोनेशन यू वांट टू मेजर फ्रॉम 0 to आप 2 लाख का डोनेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो ये गेज आपको डेफिनेटली ये डोनेशन का टोटल वैल्यू दिखा के वो काटा आगे बढ़ते रहना चाहिए ना, और आपको वो इंडिकेटर बताएगा कि आपने कितना डोनेशन कलेक्ट किया है। तो कुछ डाउट है इसमें गेज चार्ट में? नहीं सर, नहीं सर। तो ये आप गूगल शीट यूज़ करके ये सब चार्ट अगर ड्रॉ करना है ना, तो ये बहुत सिंपल है। मतलब इधर एक शीट मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने ऐड किया है, सोचो। तो फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ प्रोडक्ट एंड सेल्स, तो ये डेटा है मेरा। और इधर आप किधर भी जाके इंसर्ट चार्ट कर सकते हो, इंसर्ट चार्ट। और क्योंकि ये हाइड हो रहा है तो पहले इसको बाजू में कर दो ताकि आपको दिखे, ऐसे ये प्लेस कर दो। फिर then you can edit the chart and you can select the type of chart you want. So here it is saying column chart, but you can select all the type of charts. So there is a Geo Map, bubble Geo Map, Kpi indicator. Kpi indicator is also called a scorecard chart, and this is a gauge chart. Gauge chart is also called a dial chart or a speedometer chart. और बाकी के चार्ट्स भी, ये ट्री मैप है जो मैंने अभी अभी किया। तो अगर आपको गेज करना है तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेटा रेंज हमारा डेटा रेंज क्या है, A2 to B12 ना, ये वाला। तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और फिर मैं एग्रीगेट कर दूंगा तो आपको ये वैल्यू आ गया। तो आपने देखा कैसे मैंने चार्ट ड्रॉ किया। तो दूसरा होता है एक हीट मैप भी होता है। तो हीट मैप इज़ लाइक योर काइंड ऑफ, वो बोलता है मैग्नीट्यूड की तरह है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है या कितना ज़्यादा सेल्स हुआ है ना, वैसे।
तो अभी तक कोई भी क्वेश्चंस है आपको? नहीं सर। तो विजुअलाइजेशन में वैसे और भी 2-3 चार्ट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट मैंने जैसे आई ट्राई टू cover most of them. So I think with this we will be विजुअलाइजेशन हम इधर स्टॉप करेंगे, लेकिन आपको अगर बताया जाएगा कि डेटा स्टूडियो में जाके रिपोर्ट तैयार करो या so this reports whatever you draw in the if you want to share, right, let's say somebody should be able to see the chart, so you can share also, you can get a report link over here. Yes So sir. take this report link and you can copy this link and give it to somebody else. So whoever you're giving it to, they cannot edit it over here, they can only see it, and it is an interactive chart, means it can वो आप उसको चेंज भी कर सकते हो या मतलब उसको मतलब थोड़ा बहुत ऑपरेशंस आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल इधर जूम करना है, तो ऐसे जूम कर सकते हो. तो आपको एक ये मैप का कोई ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा है इधर. सो दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव चार्ट्स. ये पुराने ज़माने long time back, when we had to draw chart, we had to do a lot of work. But these days, if you using the tools, we drawing this visualization has become easier. तो ये कौन सा एरिया में इसका सेल्स है वो देखेंगे. ये किधर तो अंधेरी ईस्ट के नज़दीक इसका सेल्स है. So this is how you can share the chart. Okay. So if you are logged in as a contributor, then you will be able to edit the chart. If you are logged in as a viewer, you will be only be able to view the chart and just maybe do some few interactive operations. So definitely when we are doing data analytics, we usually deal with big data. This is not a big data, okay? This is just one of the sheets, for our understanding purpose, so that you get used to data analysis and visualization. I think this one.